वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम क्लास 10th का एक और डायलॉग राइटिंग का क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। वल्ली एंड राजवीर, ये दो कैरेक्टर्स हैं दो अलग अलग लेसन से। वल्ली है मैडम राइड्स द बस और राजवीर है टी फ्रॉम असम। तो यहाँ पर दो अलग अलग लेसन्स के कैरेक्टर्स लेकर उनके बीच में हमें डायलॉग लिखना है। क्वेश्चन देखते हैं। वल्ली एंड राजवीर बोथ आर क्यूरियस बाय नेचर। वल्ली और राजवीर दोनों ही बाय नेचर बहुत ही क्यूरियस टाइप के हैं, मतलब बहुत जिज्ञासु हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं। दे बोथ लव ट्रैवलिंग एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर जर्नी बिफोर हैंड। दोनों को ही ट्रैवल करना बहुत पसंद है और दोनों ही अपनी यात्रा से बिफोर हैंड यानी यात्रा शुरू करने से पहले ही उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करना पसंद करते हैं। Imagine they both meet in a bus and talk about their next trip to Coorg. आपको इमेजिन करना है कि वो दोनों एक बस में मिलते हैं और वहां पर बस में बातचीत करने के दौरान अपनी एक अगली जो यात्रा है कूर्ग की उसकी प्लानिंग करते हैं। तो उसी पर आधारित हमें ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर तैयार करनी है। अब क्योंकि ये डायलॉग राइटिंग आपकी टेक्स्ट बुक बेस्ड है, तो आपको अपने कैरेक्टर्स के नेचर को ध्यान में रखना है और उनसे जुड़ी हुई लेसन की कुछ बातें हैं उनको भी ध्यान रखना है और उसके बेसिस पर ही हम ये कॉन्वर्सेशन लिखेंगे। Hello, my name is Rajvir. Can I ask where you are traveling to? Hi Rajveer, my name is Valli. I'm traveling for fun. Oh, that's great. Are you traveling alone? Yes, I am. I just wanted to experience the bus ride. But you look so small. Why didn't you bring your mother with you? I'm not small. I have bought the ticket. I wanted to enjoy it on my own. That sounds fun. So, where do you want to go? After this trip, I want to visit Coorg. I read somewhere that it's wonderful. Oh, I also read about it in school. It's famous for its coffee plantations, lush greenery, and amazing weather. Right. Coorg is also home to some of the best soldiers in India. It would be great to visit the coffee estates and taste fresh coffee. Absolutely. I'm also excited to go trekking in the hills. And I've heard there are wildlife sanctuaries with elephants and many birds. That sounds amazing. I believe in planning everything carefully beforehand. I agree. Last year, I went to Darjeeling and did a lot of research before the trip. My friend Pranjal was amazed by how much I knew. Yes, as they say, if you fail to plan, you plan to fail. It is always good to be prepared. Really? I think we think alike. What if we plan the Coorg trip together? It would be so much fun. That's a great idea, Rajveer. We'll learn so much about Coorg's culture and nature. I'm excited. Let's finalize the dates soon. Coorg, here we come. Like, share, and subscribe.